ओके, तो बच्चे कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कीजिए। और ही कैमरा ऑन कर लिया, ठीक है। ओके जेंटलमैन, टुडे टॉपिक इज एड्स एंड आई गिव यू जस्ट 10 मिनट discuss its introduction, reason, effect and solution. The time start now. So gentlemen, today our Today's topic topic is is AIDS is we can acquired divide immunity our topic in four parts. First Cause, impact, and is its solution. information, I am and start second with is from whom was the introduction. risk of AIDS AIDS, is a and third is HIV post-infection symptoms, and fourth is its prevention. Let's start to its AIDS information. AIDS. Stop. अब देखो क्या होता है, वहां भी ऐसा ही होगा। 3-4 लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 2 दिन चुप हो जाएंगे, और अगर जैसे तुम कंटिन्यू कर रहे हो कोई बात नहीं, अच्छा है। अब जैसे जब तक 2-3 लोग बोल रहे थे ना, कोई भी तुम्हें सुन नहीं पा रहा था, जीटीओ भी नहीं सुन पाएगा कि तुमने क्या बोला, समझो मेरी बात। तो जैसे तुम्हारे पास अच्छा मौका होता है अपनी बात को ध्यान से सुनाने का, तुमने सबको चुप करा दिया, तुम कंटिन्यू बोल रहे हो, तो सारे चुप हो जाए, तो अपनी बात को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करना है। ये मत सोचना कि मैंने पहले जो बोल चुका हूँ वो सबने सुना है, वो किसी ने नहीं सुना। आप उस मैटर को भी दोबारा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात समझ गए? जैसे ही जीटीओ कहेगा ओके जेंटलमैन स्टार्ट द टॉपिक, हो सकता है 5-7 लोग एक टाइम में बोलना स्टार्ट कर दें। जब तक 5-7 लोग बोल रहे हैं, 2-3 लोग भी बोल रहे हैं ग्रुप में, जीटीओ किसी को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। फिर होगा क्या, धीरे धीरे बाकी सब चुप हो जाएंगे। और जैसे रजत कंटिन्यू में बोल रहा था, अनु चुप हो गई, 1-2 बच्चा नंबर ने स्टार्ट किया, ये भी चुप हो गया, रजत बोल रहा है। अब जब सब चुप हो गए, अब मुझे रजत को बिल्कुल क्लियरली मैं सुन पा रहा हूँ रजत को। तो रजत जो तुम पहले बोल चुके हो ना 10 सेकंड में, उसको भी रिपीट कर सकते हो। ओके जेंटलमैन टॉपिक इज एड्स, ऐसे शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो जीटीओ ध्यान से सुन पाएगा। तुम समझे मेरी बात? Yes. क्योंकि जब तक अनु बोल रही थी, नमन बोल रहा था, तुम्हें कोई सुन ही नहीं पा रहा तुमने क्या बोला। गॉट इट? Yes, sir. शुरू से स्टार्ट करते हैं। ओके जेंटलमैन, टाइम स्टार्ट नाउ। स्वाति कैमरा ऑन करो। Okay, So guys, gentlemen, today's our AIDS. I AIDS, would like and we to can divide my divide our topic in topic in 4 four parts. parts. First Introduction. is AIDS information, and second is from whom is the risk of AIDS, and third is HIV post-infection symptoms, and fourth is its prevention. Let's start to its information. AIDS full form is acquired immunodeficiency syndrome, and it's interfere with body's ability to fight against infection. The virus can be transmitted through the infected blood and spread by unhealthy physical relation. And India is on third number in AIDS index with 2.1 billion people. And what's your views on it? Yes, sir. Yes, That's sir, I agree with you. I am agree with you. It is an advanced cause in the human body of HIV, human Okay, immunodeficiency now virus. I want to The tell you virus initiates how itself into the human body. HIV is transmitted. The HIV is transmitted from one person to another person by blood, semen, by vaginal secretion, and breast milk. And the breast milk contain about the high concentration of HIV virus. What's your opinion, guys? So for instance, Okay, this virus Yes, is I'm Deepak. agree with you. HIV called Yes, human HIV virus destroys our and body the virus, first and cycle it's of also HIV called in acquired which is discovered in immunodeficiency syndrome. 1970s. Here Yes, syndrome Yes, Shivali, AIDS is the last syndrome. stage of HIV It was in first infected comes person in when the body's immune USA system in is totally 1981 damaged and in India because of virus. 1986 in Chennai. HIV belongs to the So, family of virus. retrovirus, and HIV stands for human immunodeficiency virus with cause AIDS. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome is the group of symptom. You can say that the in India the present status of AIDS is 2.1 million people alive with this virus, and first in world the first seen in 1981 in US, and India the first seen in 1986 in Chennai. So let's come about its spreading effect. The people sorry. Yes, it is So a this virus is that attacks the human immune system, and if HIV is not treated, it can lead to AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. And there is no बार बार इसका डेफिनेशन क्यों सुना रहे हो? रजत ने सुना दिया, सफिशिएंट है। उसके बाद
दीपा ने बताया, शायद अनु ने बताया, उससे पहले तुम भी बता रहे हो भाई। चलिए सुंदर कर मत, टॉपिक तैयार नहीं है क्या तुम्हारा? कुछ करेक्ट में डाल दूं, टॉपिक तैयार नहीं है। Continue. So guys, Okay, let's come about gentlemen, the let's symptoms. talk about its next Fever, point. From red whom is the risk rashes of on AIDS, body, and and person having physical relation with more than one person, Disadvantage and of person taking drugs HIV also by they injection, may and have father's mother's HIV, childborn baby after infection, and person use other person saving blade. And what's your view, gentlemen? Okay, gentlemen, let's move toward the causes. I'm going to tell you causes. AIDS is caused by a virus that is known as HIV virus. So a person can't be AIDS until it is contracted to HIV, and we can see that a healthy person has a CD4 is about 500 to 1500, but for 8% it is less than 200 CH4 factor. What's your Yeah, opinion, guys? Deepa. Yeah, Deepa, you are it is right. There are so majorly many facts transmitted in three like it ways: is blood, transmitted prenatal, by blood and sex transmission, transmission. The and blood, it is it second one spreads is by it sexual spreads by contact. blood, which is very common during the initial time of spread. Sharing needles, syringes with the infected person, and it also spreads by prenatal, that is virus during the pregnancy and delivery time, and it also spread by sexual transmissions sexual transmissions like unprotected sex with an infected persons, and also through the body fluids while performing sex activity. And next, what's your views, uh, gentlemen? Okay, so gentlemen, so would you like prevention to is add more the some important points than over cure. this? Then so Yes, we have people taken can step to virus from prevent the having disease. unprotected sex with Uh, someone who has HIV. And another common way is of having HIV, of sharing drug needles with someone who has HIV. And the virus can also spread from mother to her baby during pregnancy or by breastfeeding also. HIV doesn't survive well outside the body, so it can't be spread by casual contacts like kissing or sharing drinking glasses with someone who is infected with HIV. Yes, Shivali, it's yeah, not yeah. spread by casual We should contact aware like the kissing, people hugging, and through this touching. virus through So, the gentlemen, I think it's campaigns. enough to So the it is more important than Then prevention is cure. AIDS. Who is in the area, area, and it's typical virus. Okay, gentlemen, let's move to its next point. HIV post-infection symptoms. Swelling gland in the throat or armpit, and diarrhea decrease for several Uh, weeks in a row, fever for consecutive weeks, and to cause weight loss without any reason, wound in the mouth. And what's your view, gentlemen? Yes, Rajat, I yeah, agree with yeah. you. The I people want to look also add like shows healthy it's a for neurological a symptom long of the time disease. before the So virus. So it's important to take blood test to know about the virus. yes, no, I So Okay, agree what with is you. your point I of Yes, want to view? add some more gentlemen, it points also on causes the symptoms neurological of symptoms. AIDS. It also causes neurological symptoms like confusion, depressions, and it also difficult in walking, dry cough, shortness of breath, reddish spot on the body, and weight loss, etc. okay, guys. Anybody else wants to add some more points? Else we move towards effect. As you explained very Uh, well, Is now I there? will add 2 to 3 points in the symptom Yeah, of yeah, sure. AIDS. May If take we year know that if we see weakness, your in the symptoms immune of system AIDS are night your sweats immune system to the and point that you may have nausea, AIDS. diarrhea, Yes, and anyone short can speak. and the people fever. yes. who infected with this virus, so he should avoid to spread the virus by just to prevent unprotected sexual relationship. Yes, no, So it spreads by sexual contact. Anyone can So it is not spreads
It is not suppose like casual contact, like kissing, hugging, and sharing water glasses, drink glasses. Okay, So, guys, okay, let's move gentlemen, toward the would you effect. like to add some points? So we should move the next point of. Okay. Okay, now I'm gonna tell you the effects of AIDS. Needs more care and support. If anybody else have a AIDS, then we need to support and financial losses, poverty in family, and depression and psychological effects of human is weak that time, and death, sickness is the reasons of and the effects of this. So Yes, Deepa, I agree with Yes, you. Mohit. I want to add some more points on the effects of AIDS. First of all, the HIV virus, HIV destroy the CD4 cells, which are critical to immune system. So CD4 cells are responsible for keeping people healthy and protecting them from common diseases and infections. Once HIV enter to the body, it launches a direct attack on immune system. So what's your opinion, gentlemen? Yeah, Yes, yeah. yes, The most pe- people are likely familiar with HIV, but they do not know about the effects about its effects on the body. HIV destroyed Okay, the stop, stop, causes. stop. in many developed nations. ब्रेक लगाओ बच्चों, ऑफ योर माइक्स. दीपा इज एक्सीलेंट इन दिस जीडी. काफी अच्छी लीड कर रही है लड़की दीपा. अनु बेनीवाल, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, गुड. ये तुम्हारा सेकंड डे है, आपने बहुत अच्छा बोलने का प्रयास किया है. शेफाली इज नाइस, हिम्मत इज नाइस, नमन इज नाइस, लेकिन बहुत कम बोला है. नाइस नहीं बोला उसने. अब इसको सिर्फ गुड ही बोलूंगा. नमन बहुत कम बोला है. नमन इज एक्सपोर्ट, गुड परफॉर्मेंस है नमन आपका भी. ठीक बोला नहीं, कम बोले. और गुजरात सिंह जी तो भुजिया खा के बैठे हैं यहाँ पे. भाई बोला क्यों नहीं पूरी जीडी के अंदर? गुजरात कहाँ गया यार? बोला क्यों नहीं? माइक ऑन करके बात कर. सर बोला है, कितना बोला है? थोड़ा कम टाइम बोला है. तो वो ना के बराबर है. अंजू, आपने अच्छा बोलने के प्रयास किए हैं, आई एप्रिशिएट यू. अनु, तुम बोलने की कोशिश कर सर रही थी मेरे बीच को में. एक बात पूछनी थी. इसके बाद पूछिए. सर जैसे सब बोल रहे हैं रिपीट कर. ओके बोलो बोलो, कंटिन्यू करो. पूछो पूछो पूछो. सर जैसे सब अपना बोल रहे हैं, आपने बोला था कि सबको 20-20 से 30 सेकंड बोल के चुप हो जाना, दूसरे को भी मौका दो. यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है. वहां भी कोई नहीं सुनेगा, चिंता मत करो. बिल्कुल ऐसे ही माहौल मिलेगा. वहां भी कोई किसी की नहीं सुनेगा. अब हम तो सर जैसे कोई चुप नहीं हो रहा है तो हम भी खुद बड़े बीच में, मतलब हमने वेट नहीं करना फिर किसी का. और क्या नहीं, बिल्कुल तुमने से बताया नहीं है कि एक बार चुप हो जाओ. एक बार चुप हो जाओ. अगर तुमने बोलना स्टार्ट किया तो दूसरा बोलो चुप हो जाओ. और जब दूसरी बार बोलना स्टार्ट करो तो लीड करो. फिर लीड करो. अब रजत को कितना ही बोल लूं मैं, दे दे मौका किसी को बोलने का, दे दे मौका किसी को बोलने का. अगर नहीं देता तो मैं क्या करूं? अगला ले जाता है. बोलने वाले की जंग जीत होगी वहां पे. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रजत आपका कुछ ज्यादा ही बोल गया. ज्यादा इन द सेंस कैसी? जब और लोग बोल रहे होते हैं रजत को सुनता नहीं है, तुम उनको ध्यान से सुन नहीं होते. तो सिर्फ ये होता है कि मुझे अपनी नॉलेज कुछ कुछ गैप के बाद रिप्रेजेंट करनी है बस. तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज दिखाता है कि तुम ग्रुप के साथ इंटरेक्टिव हो. बाकी सब लोगों का ग्रुप में इंटरेक्शन दिखता है बॉडी लैंग्वेज से. तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ग्रुप के साथ नहीं मैच करता. बता रहा हूँ तुम्हें जो आप लग रहा है. क्योंकि जब तुम जीडी चल रही होती है, कभी तुम ऐसे कर रहे होते हो, कभी ऐसे कर रहे होते हो, कभी ऐसे कर रहे हो, मतलब कि तुम परेशान हो कि मैं कब बोलूंगा सर की बात. जो लोग बोल रहे हैं बोलने तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है. ऐसा दिल में आता है ना कि सर थोड़ा थोड़ा आया ना वो माइक ऑन करके. ग्रुप के साथ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं तेरा, थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है ना. अपनी बात बोली बस, फिर कान बंद. फिर थोड़ी देर देखा, हाँ 2-4 लोग बोल लिए, फिर अपनी बात बोली. और जब अपनी बोल रही तो टक 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 टक. जब दूसरा कुछ भी करता रहे मुझे तो बोल के ही छोड़नी है. दूसरी चुप हो जाती है. बोल दी फिर चुप. व्हाट इज योर ओपिनियन जेंटलमैन बोल के फिर चुप. फिर 2-3 दिन का रेस्ट है, आराम से सोएंगे. फिर जागेंगे, फिर टक 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 टक. कौन सा तरीका है जी का? इनकी बात को ध्यान से सुना भी करो. तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बता रहा है तुम्हारा इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता. वीडियो देख लेना इस बात को दोबारा से. रिपोर्ट फॉर्म में है. ठीक है मेरे भाई? तो जो बिल्कुल अनु शर्मा, तुम भाई बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दब दबे जा रहे हो. तुम 4 बार चुप हुए. एक बार चुप हो जाओ, समझ में आता है.
जब दूसरी बार बोलने लगे तो फिर मत चुप हो, जब बात करी बजाय पूरा कंप्लीट करके चुप होना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलने लगे कोई बीच में घुस के फिर चुप हो गए, ऐसे तो टिमिड टाइप पर्सनैलिटी में काउंट हो जाओगे, टिमिड टाइप। अब ये क्लास ओवर हो रही है, इसको दोबारा से ज्वाइन करो, तो 10 मिनट लूंगा आपके, मैं 10 मिनट बाद छुट्टी कर रहा हूँ, इसको भी दोबारा से रीज्वाइन करो सभी बच्चे।